Friends, welcome back once again to our channel. Today's session I will discuss about Indian politics, how it work, and how election conduct in India, and how voter influenced by politicians. So all of these discussions are discussed in this video. So without further delay, let's get started today's session. First of all, we discuss about election. In actually, what is election? In our country, we know very well India is a democratic country. You must have heard that democracy is the rule of the people, for the people, by the people. To ensure this very rule by the people, election are held. Hence, election are the process by which people select their representatives in the government. So basically, election is conduct for selecting the most representative candidate for ruling the government as a government in India. So now, if we talk about elections and elected representative, then a democratic government means the rule of the people by the people. Since in a big country with a huge population of billions, it is not possible for everybody to gather and rule each other. Hence, a system eventually came to be formed where a group of people would select one person to represent their interest. Through this person, people interest would rule as a rule. And then, if I talk about what is the process of election in India, then there are some steps by which elections are conducted in India, in which first is marking of constituencies. Marking of constituencies. In marking of constituencies are area marked for people to elect their representatives. From them in India, each constituency has roughly a similar size of the population. They know each of this type of information. Meaning of the number vary from state to state, and basically this also implies that the number of seat इन लोकसभा एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो लोकसभा में कितने नंबर ऑफ सीट मिल रही हैं कैंडिडेट के लिए, एंड राज्यसभा में कितनी सीट्स मिल रही हैं कैंडिडेट के लिए, कितना प्रोपोर्शन रह रहा है पॉपुलेशन का किस स्टेट में, ये सारे चीज़ों का प्रोपोर्शन सेलेक्ट करना होता है एंड मेजरमेंट करना होता है. सेकंड जो स्टेप है प्रोसेस का, वो है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. कैसे हमें प्रिपेयर करना है वोटर के लिए, वो कैसे वोट डालेंगे, इनकी प्रिपरेशन करना. The constituencies have people who vote for their representatives or can even stand for election themselves. Electoral rolls are the list of voters in one constituency in India. There is a universal franchise by law, meaning that every individual above the age of 18 has the right to vote and choose his representative. And so all their name should appear in the representative electoral roll. पोल भी बोलते हैं हम, तो उसमें इनका नेम जो होता है लिस्ट में आ जाता है. जो भी रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं वो वोटर का नेम यहाँ पर आ जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्ट्रेशन करना. इंडिया अलाउ एवरी एलिजिबल पर्सन टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एज लॉन्ग एज दे हैव a ticket. A political party register for election and individual file their nomination paperwork is required in every aspect. Then a person each get a ticket from the party they are representing and he can formally contest the election. Every party has a symbol that represent them. For example, BJP has a lotus flower and Congress has a
यूपी की बसपा है, बसपा का हाथी सिंबल है, एंड जो अखिलेश यादव है उनकी साइकिल सिंबल है। तो इस तरह से हर पार्टी का अपना सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, एज अ रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई सिंबल ज़रूरी है कोई पार्टी के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज पॉलिटिकल कंपेनिंग, हाउ दे कंपेन, हाउ दे शो देयर पार्टी इन country, in state, in local area, in cities. Each party contesting election has a particular ideology and set of policies. They need to hold political campaign for around 2 weeks in order to popular, or we can say publicize, or we can say to introduce or to famous in public, then गैदर वोटर्स। आइडियोलॉजी अगर हम बात करें तो दे नीड टू डू दिस एथिकली बाय कन्विंसिंग वोटर्स विद गुड पॉलिसीज एंड प्लान्स। इन इंडिया दे आर गिवन अ पर्टिकुलर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर्स बियॉन्ड विच दे कांट स्पेंड मोर मनी। जितना खर्च नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा इलेक्शन में ये लोग खर्च करते हैं वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटर से वोट लेने के लिए। तो ये पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक से ही आता है। नेक्स्ट स्टेप इज वोटिंग डे प्रिपरेशन, हाउ दे प्रिपेयर वोटिंग डे। दिस डे इज फाइनली व्हेन वोटर वोट फॉर देयर चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन इलेक्शन बूथ। अर्लियर पीपल यूज्ड टू वोट बाय ballot paper, but nowadays they use EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। By simply pressing a button on their party symbol, the voter are them vote and choose their party, whatever they fond, all of them, and the votes are them that are counted, and the candidate with the majority of the votes win the election. So ये प्रोसेस है किस तरह से इलेक्शन करे जाते हैं, किस तरह से पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जिताया जाता है और किस तरह से स्टेट में सीएम बनाया जाता है, पीएम बनाया जाता है या प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो अब बात करें अगर व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन इंडिया व्हेन दे कंडक्ट इन इलेक्शन, then in India there are a couple of problems that stand in the way of free and fair election. Some of these which are discussed now, जैसे the rigging of poll booth, and some big political parties have an obvious advantage where they can use an excess of money power to buy vote with bravery. If I talk about in Hindi, then you know very well, in political parties when election hour comes near, then political parties give advantage to voters, such as they give some benefits and they give subsidies and they give money by through बैंक और गैस जो उज्ज्वल योजना है इसके तहत फ्री सब्सिडीज़ दी जाती है और फ्री सिलेंडर कर दिया जाता है, और इस तरह से और भी बहुत सारी बेनिफिट्स दिए जाते हैं इलेक्शन टाइम पर, जिससे कि जो वोटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो उनको वोट देते हैं। इसी तरह से बैंक में पैसे भी डाले जाते हैं जिससे कि वोटर्स अट्रैक्ट होकर उनको वोट दें। लाइक दिस देयर आर मैनी अदर challenges which is I think big problem for fair election. Even while campaigning, smaller parties have a disadvantage since they don't have as much money or power as the bigger party. And I think political parties also big and bigger corrupt parties. From all of them, nobody do work for voters, for
India for society. They only do work for himself. Next one is parties in India follow caste politics, where parties give the ticket to a person who is from a scheduled caste or scheduled tribe caste or OBC, so that in her constituency he is sure to win. This enhances power in only one caste and at the same time violate the sacred purpose of reservation. So these are the problems when we conduct election at the time of election. So इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जो भी कैंडिडेट जाता है रनिंग पार्टीज़ में, गवर्नमेंट में जब भी आता है कोई कैंडिडेट, तो वो सबसे पहले तो अपनी कमाई का जरिया सोर्स बनाता है और वो कमाई करता है इंस्टेड ऑफ पब्लिक वेलफेयर। सो ये करप्शन जो है वो कभी नहीं संभलेगा, कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया इज़ टोटली करप्ट एंड आई थिंक जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी बहुत बेकार बना हुआ है इंडिया का, जिसकी वजह से जो लोग मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो लोग भागते रहते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन उनको जो उनका राइट है वो नहीं मिलता है और वो प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं, मनी भी उनका वेस्ट होता है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की जो ना कभी सुधरी ना सुधरेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।